A very warm welcome to one and all. I am XII, your teaching faculty for psychology. Today we are going to discuss chapter 9 of class 12th, which is developing psychological skills. Now, first we must understand कि skill होती क्या है. What is a skill? A skill is basically a proficiency, a facility or dexterity that is acquired or developed through training and experience. किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंसी होना, डेक्सटेरिटी होना या कोई चीज़ बहुत अच्छे से आना, जो कि हम यूजुअली या तो अक्वायर करते हैं फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट या फिर डेवलप करते हैं ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से. दैट इज़ अ स्किल. The possession of the qualities that are required to do something or get something done. That is also again another definition of skill कि उन कोई भी चीज़ करने के लिए या करवाने के लिए जिन क्वालिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है उनको possess करना is learning a skill. This is the definition that is given by Webster's dictionary. The set of skills that are essential for a professional psychologist. Now that we know that what skill means, it is important that we discuss कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स ज़रूरी होती हैं. सो मेनली हमारे पास 3 स्किल्स होती हैं विच आर गिवन बाय APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एंड इट वाज गिवन इन द ईयर 1973. सो दीज 3 सेट ऑफ स्किल्स आर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग लोगों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनका असेसमेंट होना, उनका असेसमेंट करना आना. सेकेंड इज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स, यानी कि बिहेवियर को, मैलअडैप्टिव बिहेवियर को मॉडिफाई करके, चेंज करके स्वैप करना विद अ अडैप्टिव बिहेवियर. एंड थर्ड इज़ काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल्स. All right, so we have 3 set of skills that are important to become a professional psychologist. Now, developing as an effective psychologist. How can one become an effective psychologist? To differentiate between a pseudo psychologist from a real psychologist, one can gain knowledge about the concerned person's professional training, educational background, institutional affiliation, and his or her experience in providing service. Alright, so कभी भी अगर आपको पहचानना हो कि कोई एक पर्सन स्यूडो साइकोलॉजिस्ट है, सो कॉल्ड बाबा या काउंसलर है, या फिर सच में एक साइकोलॉजिस्ट है, there are 3 or 4 things that you should be aware to know whether a person is a real psychologist or not. Firstly, आपको नॉलेज होनी चाहिए whether the person has professional training in counseling and guidance or not. Secondly, person का educational background क्या है. Usually for a educational background of a counselor, there should be at least a post graduation or MA in psychology or clinical psychology or in counseling psychology. At least इतना होना चाहिए. Added training है, then it is obviously better. किस इंस्टीट्यूशन से किया है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, एंड कितना एक्सपीरियंस है सर्विस प्रोवाइड करने का. सो हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं. द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, द ट्रेनिंग दैट ही और शी हैज़ हैड, द इंस्टीट्यूशन from where the person has done his education or training, and the experience the person has. All right, this will help you recognize whether a person is a real psychologist or a pseudo psychologist. It is critical to train as a researcher and internalization of certain professional values. So एक researcher की भी training कभी कभी ज़रूरी होती है, because it gives you a set of skills that are required to become a good psychologist. आपको norms, standards जैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है regarding different assessments. A professional psychologist addresses the problem at a scientific level. Now, this is another reason why training as a researcher is important, because एक psychologist के लिए ज़रूरी है कि वो scientifically किसी भी problem को समझे, and research gives you that exposure to science and its understanding. They take their problem to the laboratory or study it in the field settings to answer various problems.
Some carry out research to propound or investigate theoretical formulations, while others are concerned with our daily life activities and behavior. कुछ लोग रिसर्च करते हैं और कुछ लोग डेली लाइफ एंड बिहेवियर पे काम करते हैं. ऑब्वियसली हमें दोनों ही तरह के साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है. हमें साइंटिस्ट की भी ज़रूरत होती है टू डेवलप थ्योरीज, यानी कि रिसर्चर्स की ज़रूरत होती है टू डेवलप थ्योरीज. एंड वी ऑल्सो नीड द अदर काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु गिव अस गाइडेंस एंड काउंसलिंग so that they can find solution to human problems. Skills or competencies that are required to become an effective psychologist are. सो क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती हैं, इनको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं. फर्स्टली देयर आर general skills, then there are observational skills and specific skills. Let us discuss general skills first. These are generic skills which are basically required by all psychologists irrespective of their specialization. So whether a person is a clinical psychologist, a counseling psychologist, a counselor simply, a neuropsychologist, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो आपका, कुछ स्किल्स होती हैं जो सबको चाहिए होती हैं, सबके लिए कंपल्सरी हैं, रिक्वायर्ड हैं. इन स्किल्स को हम जनरल स्किल्स बोलते हैं. ये जेनेरिक होती हैं. इर्रेस्पेक्टिव आप किस फील्ड से हो साइकोलॉजी में, इट डजंट मैटर, यू शुड हैव दीज स्किल्स. इसमें ऑब्वियसली वी हैव इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल स्किल्स. ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड पर्सनल स्किल्स में सबसे पहले हमारे पास आती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि द एबिलिटी टू लिसन, दूसरों को सुन पाने की क्षमता या स्किल होना, एबिलिटी होना. एंड बी एम्पैथेटिक होना. टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर और इंटरेस्ट इन अदर्स कल्चर, दूसरों के कल्चर्स, सबके कल्चर्स अलग अलग होते हैं. जस्ट बिकॉज आपका कल्चर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट नहीं करता डजंट मीन कि आपका क्लाइंट जो आपके पास आया है उसके कल्चर में वो चीज़ नॉर्मल ना हो. राइट, सो यू शुड हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनस कल्चर. उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या वैल्यूज़ हैं उस पर्सन की, उनके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उनके अपने गोल्स एंड डिज़ायर्स हो सकते हैं, फियर्स हो सकते हैं. एंड यू शुड ऑल्सो बी ओपन टू रिसीव फीडबैक. दी स्किल्स आर एक्सप्रेस्ड वर्बली और नॉन वर्बली. ये स्किल्स वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से एक्सप्रेस करी जा सकती हैं. देन सेकेंडली वी हैव कॉग्निटिव स्किल्स. This is the ability to solve problems. A person should be able to solve problems in an efficient manner. The person should engage in critical thinking and should have organized reasoning skills and intellectual curiosity or flexibility भी होनी चाहिए. Then we have affective skills. Affective skills is basically about emotions. So a person should have emotional control and balance. The person should also be very tolerant and should have an understanding of interpersonal conflict. There should be tolerance of ambiguity and uncertainty also. Then fourth is personality or attitude. A person should have a desire to help others. The person should be open to new ideas. The person should be honest and have integrity. And the person should value ethical behavior and personal courage. Then we have expressive skills, that the person should have good communication skills. The person should be able to communicate their ideas, their feelings, and the information that they have in both verbal and non-verbal manner and in written forms also. Then we have reflective skills. The person should be able to examine and consider their own motives. अपने खुद के motives को समझना बहुत ज़रूरी होता है. अपने attitude की सही पहचान होनी चाहिए, अपने behaviors की understanding होनी चाहिए. And the person should have the ability to be sensitive to their own behaviors and others also. Last we have personal skills. This means that the person should have personal organization, personal hygiene, time management and appropriate dress also. Now obviously यहाँ पर बहुत ज़्यादा important ये भी होता है कि आप individual और cultural differences को समझो.
as a psychologist, you should be aware that different cultures have different values, different norms. They work on different principles, so you should be open to cultural differences, and you should also, as a psychologist, be very open to individual differences also. Just because you think that something is right or wrong, that doesn't mean that the other person will also have the same definition of right and wrongs. Right and wrong are subjective and can be different for each and every person. So you should be very sensitive to these differences, whether these are individual and or cultural. With this, we are done with general skills.